Hello. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. Today we're gonna watch another movie trailer. It's gonna be a highly requested trailer. पिछले 2 दिन से बहुत सारी requests आ रही हैं इसकी. This is gonna be the official trailer for Partition 1947. As you know, I'm a Pakistani and most of my viewers are Indian, so this is of utmost interest to all of us. The Partition. Let's go ahead and watch Partition. ये वीडियोस देखते हुए, ये ट्रेलर्स देखते हुए, especially when it's Indian movies, I try really hard to stay objective. I try really hard to not let my bias come in and not let my subjectivity come in into my reviews, into my reactions. But it's hard to see एक इतनी बड़ी industry, इतनी बड़ी film industry like Bollywood, who has control over 120 crore people of India, जिनको वो सिखा रही है, एजुकेट कर रही है पिछले 50-60 सालों से. स्कूल से ज़्यादा एजुकेशन बच्चों को मूवी से मिलती है. और मैं सिर्फ इंडिया के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंडिया राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. मैंने बॉलीवुड से कितना सीखा है अपनी ज़िंदगी में. मूवीज़ देख के सीखा है, लोगों से किस तरह बात करते हैं, लोगों से जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसको किस तरह एक्सपोज करते हैं, जो अच्छा कर रहा है उसको किस तरह अप्रिशिएट करते हैं. देयर आर सर्टन थिंग्स जो आप स्कूल में नहीं सीख सकते, जो आप माँ बाप से नहीं पूछ सकते, जो आप दोस्तों से नहीं पूछ सकते. वो चीज़ें आप मूवीज से सीखते हो, गानों में सुनते हो, टीवी पे देखते हो या इंटरनेट पे देखते हो अब जाके. तो देयर इज अ लॉट दैट आई लर्न फ्रॉम इंडियन मूवीज. और एज अ यंग चाइल्ड आई वुड नॉट बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन propaganda and real facts, or rhetoric and narrative and you know real objective facts. Trigger alert. आप लोगों में से बहुत सारों की ऑलरेडी हटी हुई होती है because I'm Pakistani, which is pretty evident. मैं उस पर बिल्कुल बहस नहीं करूँगा ना. Speaking about this trailer, yes, I might get offended because I'm Pakistani, और मुझे बचपन से मुझे ट्रेन किया गया कि कायदे आज़म की इज़्ज़त करो. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, he was a great personality. He was a really good personality. As a person, अगर आप उनको जानते हो तो you would feel lucky to know him. You would feel special and almost elite. He was classy. He was rich. He was educated. He was really smart. बहुत अकल थी, बहुत शऊर था. And he had an amazing personality. In this movie trailer, it appears so that the creators of the movie are trying to say that Jinnah was a little frustrated by his peers' attention. Like he did not get enough attention. He was not being heard enough. Jinnah को ऐसा लगता था, and that's why he started this पंगा of creating Pakistan, which is not entirely true, as we all know. अगर ऐसा हो तो एक बंदे से मुल्क नहीं बन जाता यार. You need people to create a country, and of course there was support. Of course there were people who wanted a separate country, because आप चाहो ना चाहो डिस्क्रिमिनेशन होती है. अमेरिका दुनिया का सबसे फ्री कंट्री. यूरोप, they're supposed to be the most educated, most well behaved, most cultural people in the world. वहाँ कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन होती है, बट होती है. इट एग्जिस्ट्स. इंडिया, अब अगेन इट्स गोना साउंड लाइक कि मैं एंटी इंडिया होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पीक फैक्ट्स. I've seen a lot of Indian Muslims talk about these things online. I've seen a lot of famous Indian Muslims talk about these things. शाहरुख खान जितना फेमस बंदा नहीं बात करेगा ये, क्योंकि उसका करियर लाइन पे आ जाएगा, उसको कोई ना कोई मार देगा. उसको रोज आके 2000 लोगों को हाथ लाना होता है, कोई भी एक नीचे से बंदूक चला के उसको मार सकता है. So he will not say these things. But I've heard, I'm not gonna name names because फिर उस बंदे को हेट मिलना शुरू हो जाएगी. But there's a lot of Indian Muslims who talk about these things. कि डिस्क्रिमिनेशन है, उनको अपार्टमेंट रेंट पे नहीं मिलते, उनको रेस्टोरेंट्स में घुसने की इजाज़त नहीं मिलती है. घुसते हैं, ये नहीं कि मुस्लिम्स नॉट अलाउड लिखा हुआ है कहीं पे, ऐसा नहीं है. बट स्टिल there's animosity. There is a lot of hatred for somebody who does not belong to your group. It doesn't have to be Hindu Muslim. It doesn't have to be Pakistan India. It could be anything. इंडिया की एग्जाम्पल दूँ, there are so many castes. कास्ट आपस में इतनी लड़ाई होती हैं. अगर एक छोटी कास्ट, सबसे बड़ी बात तो ये है, छोटी कास्ट का बंदा किसी दूसरी कास्ट की लड़की से शादी कर देता है, उसके गांव के लोग आके उसको काट पीट के चले जाते हैं भाई बीच रोड पे. दिस हैपेंस डेली इन इंडिया. इट डजंट गेट ऑन मीडिया, तो हमें पता नहीं चलता, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट इट. पाकिस्तान में इतना होता है यार, रोजाना किसी औरत पे कोई एसिड फेंक के चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो उस पर चीट कर रही है. नोबडी केयर्स, कोई कुछ नहीं बोलता. मीडिया पे आता है, कभी नहीं आता. This happens in every country, and of course Indian Muslims were like, okay, enough is enough. We can't live under this rule. We cannot go through this discrimination for
so long. इस मुल्क में, अमेरिका में, आज तक black people suffer from microaggressions. People don't act racist towards them, लेकिन जब वो चलता हुआ आ रहा होता है सामने से रोड के और उसके सामने अगर एक white couple जा रहा है, they will cross the street. It's just their natural instinct. Even to this day, अगर मैं जाके किसी के पीछे लाइन में खड़ा हो जाता हूँ and if they suddenly turn around, they get scared. वो घबरा जाते हैं कि oh, is this my last day on earth? And I understand it. अगर मैं भी उनकी जगह होता और पीछे मुड़ता और एक ऐसा बंदा देखता जो दाढ़ी में है, जिसने पगड़ी पहनी हुई है, जो मुसलमान दिखने में मुस्लिम लगता है, I would get scared because that's how my brain is trained these days by media. और मैं I'm not making an example of this. I'm telling you a true story. मैं एयरपोर्ट गया था और मैंने एक मुसलमान टाइप बंदा देखा था जो बहुत मतलब शलवार कमीज ऊपर टखनों से, you know, proper Muslim attire में, and I was genuinely scared. I'm a Muslim and I was genuinely scared कि यार ये बंदा शेडी लग रहा है. You know what I mean? So it's not, I'm not trying to be against India or Pakistan or this. मेरा बहुत strong belief है कि मैं हूँ. I can call myself Pakistani, I can call myself Urdu speaking, I can call myself whatever I want. But the fact of the matter is कि I'm a human being. You are a human being. You watching my video are a human being. तुम कह सकते हो कि मेरे इंडिया में ऐसा नहीं होता, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, तुम्हारे यहाँ वैसा होता है, but that's not real, is it? तुम्हें खुद नहीं पता यार कि तुम्हारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है. तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे बराबर वाले सिटी में क्या हो रहा है. जो तुम्हें न्यूज़ पे नज़र आ जाता है वो तुम देख लेते हो. I used to work for a news company for 1.5 years. I know how news is made. कोई एक न्यूज़ एजेंसी नहीं, डॉन, जियो, टाइम्स नाउ, हफिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, they all serve some agenda. Because if people don't watch it, they don't make money. And if they don't make money, there's no point of doing that business. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लोगों को समझने की. At least people who watch my videos, you have to understand this. There's no grouping as such. There's no तेरा और मेरा और हमारा. हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कह लेते हैं हमारी टीम, और वो it's just, you know, it's just something you tell yourself to feel good about yourself. It's not true. Arsenal तुम्हारी टीम नहीं है. Arsenal जो UK में लोग रह रहे हैं उनकी टीम नहीं है. Arsenal is just a group of people playing together as a team. You can support that team. You can call it your team. आप कह सकते हो कि ये मेरी टीम है, but it's not really your team. You don't own the team. You're not in the team. You just support the team. You support your country. You support your city. You can claim ownership of it. That's fair. लेकिन to say कि यार हमारा ऐसा और तुम्हारा वैसा is just not right logically. That's all I'm trying to say. तो जो पाकिस्तानी आके कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में तो टॉयलेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दोस्त, अपने बराबर वाले घर में जाके देखो. अगर उसमें है टॉयलेट तो उसके बराबर वाले घर में जाके देखो. अगर उसमें भी है तो उसके बराबर वाले घर में जाके देखो. एक ना एक घर मिलेगा आपको जहाँ शायद टॉयलेट ना हो, या एक ना एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा जहाँ शायद टॉयलेट ना हो, या एक ना एक सिटी ऐसा मिलेगा जहाँ ना हो. If Indians think there's no terrorism in India, open your eyes, man. Go look online. Right below Pakistan, you guys list in terrorism. इंडिया में भी बहुत मसले हैं, पाकिस्तान में भी बहुत मसले हैं. But to act blind and say हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, हम तो बिल्कुल सही हैं. No, you have people in your country too. People are evil, people are good. दोनों तरह के लोग होते हैं. So you have terrorism too. You have bank robberies too. You have car accidents too. You have corrupt politicians too. Everybody has them. Everybody deals with it. कुछ कंट्रीज थोड़ा बेहतर डील करते हैं, कुछ कंट्रीज थोड़ा बेहतर नहीं डील करते हैं. अमेरिका की एग्जांपल ले लो तो आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू, लेकिन ये जो इडियट बैठा है इनके प्रेसिडेंटशिप पे, ये बंदा इसको जिस तरह यूज़ कर रहे हैं सब, इट्स अनबिलीवेबल. आई ट्रूली बिलीव ट्रम्प इज़ अ नाइस गाय. आई मीन ही इज़ नॉट अ नाइस गाय, बट ही इज़ नॉट एन ईविल पर्सन. बट जो उसके आसपास के लोग हैं, या सो आई वॉच द ट्रेलर एंड या ट्रेलर वॉज ग्रेट. कास्ट बहुत अच्छी थी, बड़े हैवी लोग लेके आए. डाउनटन एबी से जो मेन वो था, लॉर्ड था, उसको भी लेके आया. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट द फीमेल कैरेक्टर वाज आल्सो अ प्रीटी बिग स्टार इन हॉलीवुड, इन यूके आई थिंक. तो या द कास्ट वाज रियली गुड. बहुत अच्छी कास्ट थी, बहुत अच्छे एक्टर्स थे. इट लुक्ड लाइक अ प्रॉपर इंडियन मूवी. इट्स अ रियली गुड मूवी, बट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ प्रोपेगेंडा इन देयर. And yeah, you can get triggered, you can post comments, you can press the dislike. I honestly don't give a fuck. So yeah, that was it for today. I'll see you guys tomorrow. Shabba khair.